दे आस्क ओनली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग आती है, कोडिंग सॉल्व कर सकते हो, समझा सकते हो, ले लेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चंस इजी तो नहीं होते, ऐसा नहीं कि मैं आज शुरू करूंगा 2 हफ्ते में या 3 महीने में बहुत अच्छा कोडर बन जाओ कि प्लेसमेंट्स के लिए कर रहे हैं, फिर इस कंपनी के लिए। डोंट डू दैट, डू बेसिकली जो हो रहा है तुमसे, जो तुम्हें करने में मजा आ रहा है उस पर ध्यान दो, एंड बाय 2 years of college you will have figured out कि तुम्हें क्या करना है। Hello everyone. Today we have someone very special, SW3 from Google, and he's gonna share some really great insights about Google India. Like Google में hiring process कैसी होती है, perks कैसे होते हैं, वो किस तरीके से Google में पहुंचे, क्या interview process थी. I met him on LinkedIn. We had some really great conversations about Google and other companies, like how things are going down and what should everyone prepare to get into Google, which company is trending. We have a lot of like great conversations, and out of which I think we will be able to share some great insights with you as well. So today we have someone really special, an SWE from Google, SW3 mentioning that specifically. So we have Aritra Sen. Hello Aritra, how are you doing? Please. Yeah, hi Mukul. Let's go Okay. with a basic introduction of yours so that our audience, like, they'll know who you are in a better way. Okay, so you already gave the highlights, right? So I'm a Sweet 3 at Google. I got promoted very recently, and I joined Google roughly 2 years back, so 22 months to be accurate. So it was August of 2020. I joined straight out of college. So my process was an off-campus one. That's how I got into it, and I've been here since then. I've been working from home throughout, unfortunately. But yeah, I'm going back to Hyderabad next week, so that's a big thing. Nice. So excited for that. So yep, that's basically my college. I did my bachelor's in computer science. I graduated in 2020 from Jadavpur University. That's in Calcutta. So that's basically where I studied from. And for Google, why? Oh, like to be honest, there are very less people who join Google directly from college, being a like off-campus part जिसे हम बोलते हैं. Like I have seen people joining Google directly from college when Google visits their campus, but it was quite rare to see people joining that place. And the promotion that you had is like too quick, to be honest. Like at Amazon, if we see the promotion time is 1.6 years to 2.5 years, and I have seen mostly people 2 साल से ऊपर आराम से लगता है. So if you're done it like under 2 years, I feel it's like to be very great thing. So let's start with like I think you have spent a lot of time at Google, तो आपको पता होगा कि यार क्या क्या चीजें Google के इंटरव्यूज में देखते हैं वो लोग. तो स्टार्ट करते कुछ देखते हैं इंटरव्यू प्रोसेस कैसी होती है और क्या क्या मतलब चीजें जो आप सजेस्ट कर सकते हो लोगों को जो आपने कुछ पिछले अपने टाइम पीरियड में देखी. अच्छा, okay. So Google process ना, like मुझे personally बहुत अच्छा लगता है because it's very straightforward. They ask only data structures and algorithm, बस problem solving, coding आती है, coding solve कर सकते हो, समझा सकते हो, ले लेंगे. So like putting it very raw, वैसे होता है. So they have a lot of rounds though. So मेरे केस में I guess जितने rounds हो सकते हैं उतने हो गए. They started with a HR her call was starting में she asked me some DSA MCQs. That's not typically something that happens, but मेरे साथ हुआ, which was shocking to me really. फिर मेरे लिए phone interview हुआ था, which is basically a coding interview, and then there was on sites. ये pandemic के पहले का बात है, तो I actually got to visit the office, काफी मस्त था. So we had 5 back-to-back interviews. बीच में एक lunch था, but 5 back-to-back interviews, 4 coding plus 1 googliness. And that's basically the process. उसके बाद they take their time, hiring committee बैठती है, if it goes, and that's how you get your result. So that's the process in a very compact form. You asked Google देखती क्या, right? So एक तो ये said कि it's complete problem solving, but as an interviewer, like I've taken a lot of interviews, so there are 3 very fundamental things. One is how you think about the problem. Like we don't as an interviewer, I personally don't like candidates जो questions सुनते ही कूद जाते हैं उसमें ना, like कि हाँ ठीक है मुझे पता है कैसे solve करना है. So we prefer candidates who ask questions, so basically seek clarity, मतलब सोचते हैं question के बारे में. So that is one thing. Communication, basically you're thinking about the question, you're discussing the question, discussing कि हाँ ये edge case है, ये चीजें हो सकती है, all that stuff. वो एक चीज है. दूसरी is obviously solution पता चल गया and everything, but how you write that code लिखने का style क्या है,
how clean your code is, how particular you're with like functions में तोड़ना जहाँ possible है, reusable components में तोड़ना, proper variable naming, coding pattern basically हर language का होता है ना कि like recommended coding style है ये, so वो सब consistency जो होती है लिखने के समय वो सब maintain करना, so those are things, and thirdly is basically obviously सब candidate हटकते नहीं है, but even if you get stuck, right, like how do you have that conversation, like do you discuss it, like are you like देखो दो तरह के candidates होते हैं, ठीक है, one is I got stuck, I'm going to stay silent and think about it personally and invest my time, which is like ठीक है, अगर तुम उसके बाद result बता देते हो then like I can't complain, but बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, so the second kind of candidate ना जो discuss करते हैं like okay मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो again back to communication but like you expressing your thought process, मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में, मुझे ये लगता है कि ये हो सकता है, मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ बट यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, so even that conversation has a lot of value because you can understand कि candidate has a thought process, वो ऐसे काम कर रहा है, like you can pick up qualities and you can give your input and help the candidate, you can push the candidate to the finish line, so that's probably the third thing. I have another follow-up question. You said you had 4 technical interviews. Am I correct? On site में, हाँ. Okay, so out of these 4, is there any specific round for system design or everything was based on problem solving? So L3 and in fact even in L4 software just like so SD2 and SD3 तक they don't ask system designs. At least India में तो नहीं पूछते. I think so बाहर भी नहीं पूछते. So you know there is no system design. There's all just data structures, algorithms, coding. In fact, the guidelines go as specific as saying, मुझे याद है मेरे recruiter ने बताया था basic DSA. So ऐसे भी नहीं segment tree उस तरफ भी नहीं जाता. So they focus on basic DSA. Now, obviously questions easy तो नहीं होता है, but like the domain of problems is very basic. मतलब तुम्हारे conceptuals and जितना तुम्हें कॉलेज में सिखाया जा सकता है बेसिक ये प्लस तुम जितना खुद सीखते हो. That's nice, that's nice. और एक और another follow-up question. Like the type of questions that Google ask, are they similar to lead code, or what should someone prepare? Should someone like do lead coding or do competitive coding day and night, or just focus on implementing data structures? What kind of thing should a person do to get into Google? Okay, so this is something जो लोग बहुत पूछते हैं मेरे को, ठीक है, and I have talked about it बहुत. I have like recently even made a YouTube video, so you can find that on my channel, like detailing our output. But I will keep it short यहाँ पे थोड़ा, मतलब summarize करके बताता हूँ. So there is CP, and it's very good. जिनको आता है, जो कर पाते हैं समय दे के, it's very good. You are a very good coder if you are excelling at CP, ठीक है. But एक बहुत ज़्यादा time commitment का एक चीज़ है, like ऐसा नहीं कि मैं आज शुरू करूंगा 2 हफ्ते में या 3 महीने में बहुत अच्छा कोडर बन जाऊंगा. स्पेशली आई एम स्टार्टिंग ऑफ ना, लोगों को लगता है कि सीपी करेंगे तो लाइक फोड़ देंगे, which is like probably true if you are able to do it over 1.5 years, 2 years, 1.5 years, 2 years, you will get very good at it. But you thinking कि यार like अभी 3 महीने बाद प्लेसमेंट आ रही है या 6 महीने बाद प्लेसमेंट आ रही है और मुझे अभी कुछ नहीं आता है और मैं अभी सीपी शुरू करूँ, then it's like completely wrong. So lead code is basically the ये मंत्र कि lead code से करो. अब lead code कैसे करनी है, like obviously like I said right, the video I've like talked about how should you use lead code and वो सब भी, but lead code पे focus करो. That's the problem domain. वहाँ that covers all ranges of difficulty जो तुम्हें जरूरत है. उसके scope के बाहर जाने का sense नहीं है. So that's basically, and you asked about implementing data structures ना, so implementation obviously जरूरी होती है, मतलब lead code में भी करना पड़ता है, हर जगह करना पड़ता है. हाँ एक चीज है, don't over commit to library functions, ठीक है, like a lot of people are like यार इसका एक library function है, इसका library, especially Python में कोड करते हो तुम देखोगे like they're like I have a library function for everything. Yeah. So like don't over commit to it because like at a point if your interviewer is like tired of you ना, like कि हाँ तुम library function से तो हो जाएगा, but they will give you a tricky variation of that जहाँ तुम library function नहीं use कर सकते हो, but same logic लगेगा. So that's probably an advice when you ask them about implementation. Got it. So if you still don't know about Aritra's YouTube channel, if you still haven't seen any videos, I'll highly recommend that. तुम सोचो यार एक वर्किंग प्रोफेशनल, एक इतना बढ़िया बंदा जो इतने एक्सपीरियंस के साथ है, जिन्होंने इंटरव्यूज निकाले हुए हैं, जो खुद इंटरव्यूज ले रहे हैं बहुत बड़ी कंपनीज के लिए, कुछ अपना स्पेशल टाइम निकाल के अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ वीडियोस बना के आप लोगों को डाल रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है. आई सजेस्ट एवरीवन टू चेक आउट दैट वीडियो, लीड कोड वर्सेस डीएसए वर्सेस सीपी, व्हाट शुड यू डू, एंड चेक आउट एवरी सिंगल थिंग दैट Aritra is
posting there. I think that's going to benefit a lot, like everyone, every community, and I think we all will be growing with that. So yeah, moving onwards to the next question, which is related to like how does a day looks at Google. So since you are working mostly from home, so when do you wake up, when the scrum call is, what kind of meetings are there, और कितना टाइम लग जाता है मीटिंग्स में, कोड रिव्यूज कैसे स्पेंड करते हो, कितना टाइम देते हो, वो वाली सारी चीजें देखते हैं, और कितने आवर्स तक एक हम एवरेज मान के चलते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम में काम करना पड़ता है. So I will ask questions उल्टे ऑर्डर में जैसे तुम्हें पूछा, ठीक है, because like the hours question is like very relatable. So होता क्या ना, especially like मेरा personal experience work from home is flexible hours जो होता है ना, this concept. So you don't have like यार सुबह के 10 बजे उठेंगे, 8 बजे तक काम करेंगे, 9 बजे तक काम करेंगे, जो भी है, like those hours system, ठीक. तो like शुरू करते 2 घंटा सुबह को किया, लंच के बाद मान लो एक ब्रेक ले लिया, फिर अचानक से 5 बजे शुरू किया, 1 घंटा काम किया, रात को किया. And like there's also this, you know, like मेरे जितने projects हैं, so I've had overlapping projects with US people. तो एक वो भी हो जाता है कि उनके साथ मीटिंग्स करो तो वो रात के 9-10 बजे हो जाते हैं. तो यू फील लाइक यार रात को तो वो करना है, तो दिन में आराम करते हैं थोड़ा. तो वो सब करके लाइक I guess on average you have to say I don't work more than 7 to 8 hours. बहुत काम रहता है तब शायद 9 चले जाता है, but I don't overwork. ठीक है, like I try to be as productive हम काम करते हैं, but उसके अलावा नहीं. You asked me what does the average day look like. So we have our scrum calls जितने भी होते हैं दोपहर को post lunch, like because early पहले वक्त 10-11 बजे होते थे, a lot of people missed out, so we're like ठीक है post lunch रखते हैं. So that's when we have our scrum calls. I wake up generally 10-11, मतलब 10-11, कभी 12 भी हो जाता है, but like typically 10-11 I wake up. I basically do a lot of code reviews myself. दूसरों के कोड रिव्यूज करना वो सब सुबह को करते हैं, रात को एक बार करते हैं. like I do twice a day. Code reviews in Google have like a very nice system. So there is something called readability Google में, which is basically people who are like proficient in that language, तुमको एक readability का tag मिलता है. And you basically have to earn it. You have to go through a review process and get that thing. So when you're submitting language in a code, you need to get your code reviewed by someone who has readability in that language. So Google का style standards वो सब ensure हो जाता है उस चक्कर में. And when it comes to logic and things, there is decent, like बहुत अच्छा review. मुझे लगता है review culture is good, more or less. Like obviously कभी-कभी होता है कि यार like चीजें जल्दी push करनी है तो थोड़ा ढीला छोड़, but वो खुद के टीम में होता है. But a lot of time I've worked with a lot of दूसरे टीम के ना लोग, and if you're sending your code to a third person ना review करने के लिए जिसको ज़्यादा context है, but who is not working on this, so he sees it like, okay, how would I have done this statement basically. So you get a lot of perspective, especially ये पूरा readability review and ये सब process. So that is something I like a lot. That's nice. That's nice. Another follow-up question: how many reviews, like how many revisions does it takes to like push the code? And so completely depends. So मैंने हर तरह के review देखे. So I work with one reviewer, not one reviewer, one like team. So उनके साथ रिव्यू करने के लिए takes me around 8 to 9 iteration, मतलब लग ही जाता है, ठीक है. Like उनके साथ काफी iterations लगते हैं, but then there are some people who are like, okay, like they're like थोड़ा loose on the review, like they review it properly, but they like give that वो space रखते हैं कि चलो हाँ हम ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं, this is like a good middle ground, not a middle ground, but ठीक है acceptable range में. So उनके साथ उतना नहीं लगता है. For me code reviews typically has been 2 to 3 to 4 iterations max. But with this, like I told you the same, like 9-10-8-9 तक चले जाता था, so it was like मेरे को भी लगता था वाह. But then he's very like particular and it's a very good learning curve. ज़्यादा iteration जाना, because especially ना I've heard about, I'm not sure Amazon, but like we have had people from Amazon, Google, and like they have told me that Amazon में number of iteration matter, like it affects your performance, it affects how your code is seen. So that is not something that happens in Google. At least मेरे experience में नहीं हुआ है कि no one is going to look at your code and be like कि तुम्हारे ज़्यादा revisions हुए तो code खराब है. Obviously ज़्यादा revisions हो, like whenever someone asks you कि give your best code samples, you try to present जिसमें कम revisions है, but like that's not a demarcation किया. इसलिए people are more open to give like more elaborate reviews and stuff. Got it. Let's talk about a very famous question, like जिसके लिए हम Google में जाना पसंद करते हैं. Obviously fame, salary, work culture बहुत अच्छा है, वो सारी चीजें, मतलब everything, like everyone knows about that, right?
गूगल इज बेसिकली द टारगेट कंपनी ऑफ एवरीवन, सो सबसे पहले रिसर्च करना वहां से ही शुरू करते हैं. So what are the current perks that Google is offering to their employees? Like work from home में क्या रहता है, और अगर आप ऑफिस जाओगे तो ऑफिस जाने में क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, या जब आप एक बार ऑफिस विजिट पर गए थे वो विजिट कैसा रहा था? So, okay, office visit से शुरू करते हैं, ठीक है. So I gave, like I said, right, on site गए थे. I went to the office generally. Office was cool. Like that was in the Bangalore office. But सबसे must was lunch. Like that lunch period was amazing. They have like equivalent to 5-star grade food, like gourmet food properly. So काफी मस्त है. खाना is very good. So that's stand out. Like that's the only time I've had it. And interview तो समझ ही सकते हो ना, you don't overeat interview के समय, या फिर ये मिलना तो चाहिए. बुरा लगता था उस समय, like, इतना खाना है सामने, इतना अच्छा है, but नहीं कर सकते. So that's basically one thing. But in general, जो work from home में हुआ है ना, so they initially gave us like this $1,000 thing for like getting a setup done. And like that was like in 2020. And उसके बाद they also gave like बीच बीच में और भी like monetary है, just like if you want to improve your work from home ये thing. So Google does that. So well-being and work-life balance, so that part is very good. The other bit that you asked was the और क्या perks है, insurance वगैरह वो सब में ही रहता है. Goodies, like मेरे घर में Google से इतने couriers आए हैं, I can't even begin to say at this point of time. Oh my So God. वो तो है like ये goodies वाला scene is very nice. Also मतलब और भी चीजें ना, like things that people don't usually talk about, like accessories, ठीक है. For example, like you can get approvals, like आधी चीजों के लिए approvals चाहिए नहीं होती है, like unless it's a laptop or a mobile phone या फिर उस तरह उस critical monitor, you don't need approvals उसके अलावा. So you get like very simple thing, mouse, keyboard, earphones, headphones, ये सारी चीजें like बहुत easily मिल जाती है. Like ज्यादा कुछ झंझट नहीं है. लाइक दोस्त थिंग्स ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी की, हाँ यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, ये चीज हमारे पास अवेलेबल है, ले लो, हम घर Oh. तक भिजवा देंगे. सो लाइक दैट फीलिंग इज वेरी नाइस. एंड आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट कि यार तुम इतने सही इंजीनियर्स रखे हुए हैं तुमने, तो तुम्हें प्रोडक्टिविटी के लिए ये सारी चीजें देनी भी चाहिए बाकी कंपनीज को भी, हाँ, कि इट डज. अपने यूज के लिए ले रहा होगा पर्सन. हाँ, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. एंड द एंड बिकॉज चीजें वर्क फ्रॉम होम हो गई है, इसलिए लाइक रोक देंगे या फिर स्लो हो गई है, वैसा उतना फील नहीं हुआ है. लाइक दे इट्स वेरी इमीडिएट, लाइक एक हफ्ते 3-4 दिन जितना भी डिलीवरी टाइम लगता है आ जाता है. सो दैट्स अ वेरी नाइस टच. Again, that's nice. So that was a lot of insights. Let me ask you the final question for this, and then we're gonna wrap it up. What are your 3 or 4 or a couple of suggestions that you will give to people who are watching this video, who are in first year, second year, who are in basically college, or have an aim to like join a very big company and become a good engineer? This लाइक कंपनी ज्वाइन करना ठीक है, एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए आपके क्या सजेशंस होंगे, कुछ मिस्टेक्स जो आपने की हो, या जो कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? तो एक चीज है, बी एक्सप्लोरेटिव, ठीक है. लाइक बहुत लोग ये सुनते हैं कि लाइक भाई ये कर लो वो कर लो, बट लाइक बी एक्सप्लोरेटिव, डू प्रोजेक्ट्स, चीजें ट्राई आउट करो. लाइक इट्स नॉट लाइक कि भाई फर्स्ट ईयर में आके ये क्वेश्चन होता है भाई सीपी करे, लीड कोड करे, प्रोजेक्ट करे, सब करो. लाइक एट फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ योर कॉलेज यू हैव इनफ टाइम टू ट्राई थिंग्स आउट. Like don't hesitate. Like worst thing होगा कि fail करोगे, अच्छा नहीं लगेगा and all that. And those like you get very good ये science किया, मुझे ये पसंद है, मुझे ML पसंद है, मुझे DSA पसंद नहीं है उतना, या फिर मुझे एप्स बनाना ज्यादा पसंद है, मुझे रिसर्च की तरफ नहीं जाना. लाइक ये क्लैरिटी जो है ना, लाइक ये इवेंचुअली जरूरत पड़ती है कि बाद में तुम्हें क्या करना है. लाइक इट बिकम्स वेरी इजी फॉर लाइक, ओके आई हैव ट्राइड दैट आउट, इट वाजंट माय कप ऑफ टी, या फिर I don't like to do this particular thing because जो भी रीजन होगा तुम्हारा, बट वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है, वो एक्सपेरिमेंट की बिना नहीं आती है. दैट्स वन. सेकेंड इज डोंट बेसिकली, स्पेशली पहले 2 साल कॉलेज के ना, डोंट थिंक अबाउट कि यार कौन सी कंपनी में जानी है. लाइक आई रिमेंबर कॉलेज में गया था स्टार्टिंग में, एंड सीनियर्स वगैरह, इट्स ऑब्वियसली जो हमारा एटमॉस्फेयर भी है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि भाई चलो गूगल के लिए, लाइक इफ यू वांट टू गेट इनटू गूगल तुम्हें ये करना है, तुम्हें अमेजन जाना है, तुम्हें ये करना है. एंड बेसिकली एक माइंडसेट बन जाता है. या फिर कोई बोलता है कि भाई सीजीपीए डज नॉट मैटर तुम्हारे प्लेसमेंट्स में, तो यू डोंट ये वो छोड़ देते हो कि कॉलेज का पढ़ाई की जरूरत नहीं. तो लाइक डोंट वो कि प्लेसमेंट्स के लिए कर रहे हैं फिर इस कंपनी के लिए, डोंट डू दैट. डू बेसिकली जो हो रहा है तुमसे, जो तुम्हें करने में मजा आ रहा है उस पर ध्यान दो.
and by 2 years of college you will have figured out कि तुम्हें क्या करना है, like तुम्हें किस रास्ते पे जाना है, like give everything a fair chance, and like fair chance is important ना, ऐसे नहीं कि उठाया छोड़ दिया, उस तरह का मत करना. Nice. Thank you. That's great. Before moving onwards, I would like to introduce you all with Newton School. Me, Mukul, and Aritra, we both are associated with Newton School in a like casual manner. We have like normal conversation with the team, what's going on in that edtech space, what's booming, how we can like increase like the good number of engineers and stuff. And Newton School is doing a very great job over there. So if you are a college student looking for placement, if you haven't got good guidance and stuff, just think of the people who are at Newton School, connect with them. Like अगर अरित्रा और हम, मतलब मैं तो अपने आप को कंसीडर नहीं करता एक अच्छे इंजीनियर में, but if Aritra is like associated with in some kind he's associated with Newton School, it's gonna be like उनके mentors और भी अच्छे होंगे, या फिर कुछ अच्छी चीजें वहां से हमें सीखने को मिल सकती हैं. So if you haven't checked out Newton School, do check it out. If you still haven't visited Aritra's channel, I'll add that link in description as well as in comment, as well as जो ऊपर आई बटन आ रहा होता है इस साइड कहीं भी आ रहा होगा वहां भी डाल देंगे. And yeah, that's everything that I wanted to ask to Aritra. Thank you so much, Aritra, for your time. It means a lot कि यार एक मतलब सीनियर इंजीनियर हमारे साथ आकर डिस्कशन कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज ले चुके हैं, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच Aritra for your time. Yep, thanks Mukul, it was lovely being here.